Good evening, friends, and welcome to Master Stroke. Today is 4th of October, 2024, 6 p.m. Today is Friday. We do it usually on Saturday, but because it's festival time and I'm traveling, so I decided to do this event on Friday evening. Thank you so much for joining. Still in good numbers. Today, I'm going to talk about Sensex, which is at 83, 84,000. Fear, both in the minds of MFDs and the clients, vision, and golf. Let's start with Sensex. Sensex went up to 86,000. 3 months back, we were at 73,000, which is almost around 20%, 18, 20% index is up from the lowest level 3 months back. Now, in the last 7 days, Sensex is down by 3%. Today, it was a seesaw, plus 1%, minus 1%, plus 1%. Finally, we went down 800 points on the BSE Sensex. And I got a couple of calls today. And one of the MFD called me and said, "How are you?" I said, "Fine." I asked him, "How are you?" He said, "Still absorbing the shock of the markets." I'm like, "What is this? 1%? In 1%, आपको ऐसा लग रहा है कि market में shock आ गया?" And then he recovered and he changed the topic. But Sensex is a number game. Sensex is just a number game. आपके कंट्रोल में नहीं है, भूल जाओ. Sensex को हमेशा 3 साल प्रोग्रेसिव देखना चाहिए. And I will tell you why. You see, Sensex will always go up, because Sensex is constituted by stocks, and stocks are going up. And why stocks are going up? Because Indian GDP is 13%. So it says 7% plus 5, 6% of inflation. So it is 12, 13%. And it tells you that me, you, and all the companies are making 13% every year growth. So their profits are going up by 13% usually. And so the Sensex should go up by 13%. So this is the linear connection. Now the question is that, is the Sensex expensive or cheap? I will leave it on to you, to the market experts. All I believe is this: the historical numbers जो कहते हैं, वो कहते हैं कि Sensex थोड़ा expensive है, थोड़ा ऊपर की तरफ है. कितना? 5-10%, 15%. So in 3 years, what will happen? In 3 years, the profits will go up by 50% approximately, 40-50%. So the Sensex should go up by 40-50%. If not, it will go by 30%, 25%. So 3 साल बाद तो बाजार तेज लगता ही है. So you should not very much fear about the Sensex. ये आता जाता रहेगा, गिरेगा, AUM ड्रॉप करेगा, आपको तकलीफ आएगी. But the way you explain your clients that markets will not be the same, in the same way you should also start thinking about your business. Every year you will not get mark to market positive. It will be negative sometime. Second year it will be double up. Yeah, so adjust it, acknowledge it. जिस तरह से सर्जन्स को ब्लड देख करके दर्द नहीं होता, उस तरह से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सेंसेक्स में गिरावट देख करके तकलीफ नहीं होनी चाहिए, शॉक नहीं होना चाहिए. व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? बट होती है, तकलीफ होती है. सर्जन को तो ब्लड देख के तकलीफ नहीं होती, बिकॉज एवरी डे ही इज यूज्ड टू इट एंड ही नो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, बिकॉज ही इज डूइंग इन्वेजिव सर्जरी, तो ब्लड विल स्पिल आउट. उसी तरीके से आपको एवरीडे का काम है आपका. And what you are doing every day, markets will go up, markets will go down. So you need to mentally be strong that it will keep on happening. Let's talk about fear. अभी war है. Last few days, especially today and yesterday, a few of my clients wanted to have my opinion on war and what they think about it. And this is my view. Yesterday evening, a client called me and said, "Brijesh, what's your view?" And I said, I will discount that it will not escalate into a full-blown war. And he said, "Why?" People are saying my sound is not very clear. Can a few of you respond in the chat box who think my sound is clear? Clear. Okay, so I will move ahead. Some are saying no, some are saying no. I don't know. So I will move ahead. I don't have a choice. Okay, perfect. I said, you see,
एवरी ईयर आपको 4 बार बुखार आता है, सर्दी जुकाम आता है। हर बार आपको लगता है इस बार कहीं कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाए, इस बार टाइफॉइड मलेरिया और डेंगू तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं होता। 5 साल 10 साल में एक बार होता है। when your fever translates into dengue, malaria, or typhoid, which is serious, not so serious, but still worse than fever. In stock market, every time you will get fever, which is around say 3% correction, 4% correction, a little war here and there, Russia, Ukraine, Iran, Israel, you will think it will escalate and markets will fall down by 20%. It will not happen. It will not happen. 5-10% we will not talk about. We'll talk about 20%, 25%. Will it happen? It generally doesn't happen. So I will discount that this time also there will be no dengue, no malaria, no typhoid, and markets will recover just like fever. In the afternoon today, markets recovered. यानी कहाँ 20% की माइनस की बात करते हो, कहाँ मार्केट ऑलरेडी आज गिरने के बाद रिकवर करके पॉजिटिव जोन में आ गया था। एक दिन में अगर ये हो सकता है तो जनरली यू शुड नॉट फियर कि वॉर कैन मेक इट वर्स। ऑफ कोर्स इट कैन, सम टाइम इट कैन हैपन, बट कितना डरोगे यार, मतलब कितना परेशान होगे। तो क्लाइंट को आपको एक एग्जांपल देना है। रोज रोज डेंगू मलेरिया और टाइफॉइड नहीं होता है, कभी कभी होता है, उसका सावधानी रखना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि घर से नहीं निकलेंगे, कहीं आएंगे जाएंगे नहीं। सावधानी रखनी है, मगर यू कैनॉट इग्नोर द वर्ल्ड एंड एवरीडे लाइफ। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। दूसरा फियर क्या है? क्लाइंट का फियर होता है कि बाजार गिर जाएगा तो क्या करेंगे। उसका आंसर दे रहा हूं मैं आपको। क्लाइंट को सेम एग्जांपल देना है, फीवर का जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, प्लस एक जो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके का एग्जाम्पल है, वो ये है कि साहब 5 साल 7 साल 8 साल लगा करके यू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। यू कैनॉट अफोर्ड टू रूइन दैट पोर्टफोलियो जस्ट बिकॉज there's something happening in the global markets. A client called me and said, I want to redeem 100% of my portfolio and I will invest later. I said, 10 साल लगा यहां पहुंचने में, कॉल गलत हो गया तो क्या करेंगे? What if markets go up? What if it doesn't go down? What if it goes down but you're not able to buy? शॉर्ट टर्म टैक्स भरेंगे, एग्जिट लोड भरेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्या फायदा? कितना का इंपैक्ट आएगा? 1 करोड़ के पोर्टफोलियो में 5-10 लाख रुपया हो सकता है, बेस्ट केस सिनेरियो में बन जाएगा। यू आर इन द गेम टू मेक इट 10 करोड़, नॉट think about 5-10 lakhs. He agreed, he understood, and he said, let's not do anything. So it's about you have to prepare the clients. One more powerful punch that you can give to your clients is this, and I use it very well in my WhatsApp communication with my clients. And I say, when a client's portfolio from 20 lakh goes up to 2 crores over 5, 7, 8, 10 years, and he asks me my view, I tell him, till now it was easy. At 20 lakhs, I told him, till now it was easy. 20 to 2 crores will be tough. Now at 2 crores, I'm again writing to him because he has forgotten what I told him at 20 lakhs. Now I'm telling it at 2 crores. Now it is going to be more challenging. Friends, people like challenge, believe it or not. अगर challenge नहीं तो मजा नहीं है। Client को भी challenge चाहिए. So you need to challenge the client. You need to challenge the employee. You need to challenge your family members to proceed and do something meaningful and big in life. So I challenge my client that कि साहब 2 करोड़ तो बन गया, 20 करोड़ बनाना है ना, तो 4 करोड़ के बाद पोर्टफोलियो वापस 3 करोड़ हो जाएगा। सो और फियर आएगा और डर आएगा, तो वो डर को निकालना होगा। आई एम प्रिपेयरिंग माई क्लाइंट फॉर बिगर शॉक्स इन द फ्यूचर बिकॉज इट विल कम, एंड बिकॉज यू चैलेंज द क्लाइंट कि साहब अभी डर रहे हो, अभी डर से कुछ नहीं होने वाला, डर तो आने वाला है। आई एम मेकिंग देम प्रिपेयर्ड। सो दिस इज द वे यू हैव टू बी। एंड आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि 2 करोड़ से क्या होता है, 20 करोड़ की बात करते हैं। जिसका 20 करोड़ का पोर्टफोलियो, उसको बोलते हैं कि 200 करोड़ का पोर्टफोलियो का सपना देखें कभी आप? क्या बोल रहे हो? Yesterday I had a client call whose portfolio is 20 crores, actually 20 crores. And I told him by calculations, his income and everything, that in 10 years' time, your portfolio will reach 300 crores. And he said, after a long pause, are you joking? And I made some calculations and I told you your SIP book, your income possibility, and your current portfolio, CAGR, it will happen. And he said, oh my God. And now he's thinking about 300 crores.
दिस इज हाउ यू प्रिपेयर। एक तरफ उनको डर लग रहा है कि 2 करोड़ गिर जाएगा, और आप उनको बोलते हो 200 करोड़ का, 20 करोड़ का 200 करोड़ हो जाएगा। 2 करोड़ का डर खत्म हो गया। दिस इज हाउ यू हैव टू मोटिवेट योर क्लाइंट्स। थर्ड, विजन। Many mutual fund distributors who are at 50 crores, 25 crores, 10 crores, or 100 crores, what are they thinking? They're thinking of doubling their AUM. Those distributors who are thinking of doubling their AUM will not do well. Because vision क्या है? डबल करना है। डबल तो अपने आप ही हो जाता है, कुछ नहीं करने से भी आपका 4 साल में AUM डबल हो जाएगा। One of my friends in one of the AMCs told me a few years back, mutual fund distributors will need to do a lot of effort not to grow. ग्रो नहीं करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, ग्रो करने के लिए नहीं। डबल अपने आप हो जाएगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर का विजन है कि मुझे अपना एयूएम डबल करना है, वो सुबह से शाम तक बहुत टाइम है उनके पास, काम तो है नहीं, डबल तो अपने आप ही हो रहा है। वो गॉसिप करते हैं, वो क्रिटिसिज्म करते हैं, वो नेगेटिविटी में चले जाते हैं, वो दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि विजन ही नहीं है। 50 करोड़ का 100 करोड़ करना है। विजन क्या होता है? 50 करोड़ का 500 करोड़ करना है, 50 करोड़ का 5,000 करोड़ करना है। जब आप ये सोचेंगे ना 10 गुना ग्रो करना है, 100 गुना ग्रो करना है, तो दिन भर टाइम ही नहीं मिलेगा आपको कि किसी और से बात करें, शिकायत करें, गॉसिप करें। आपका पूरा फोकस स्ट्रेट लाइन पे चला जाएगा, बिकॉज इतना लंबा जाना है। लेफ्ट राइट करेंगे तो सामने का रास्ता वीक हो जाएगा। सपोज करो आपको 10 किलोमीटर सामने चीज से चलना है, और अगले मोड़ पे 12 किलो आपने चले गए, चलो कॉफी पी के आते हैं, फिर दाहिने चले गए, चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर सामने की जर्नी तो लेट हो जाएगी ना आप। अगर 1 किलोमीटर जाना है तो आप लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं। बट अगर आपको लंबा चलना है, देन यू विल हैव टू गो स्ट्रेट। सो मेक अ बिग विजन, don't make a small vision, make a very big vision, let's say 10 times and 100 times. It will help you not to deviate in your goal. How to do that? सबसे पहला काम है डेलीगेट करो। सब चीज डेलीगेट कर दो। सेल्स के अलावा 100% चीज को डेलीगेट कर दो। अपने बिजनेस में 10%, अपनी इनकम का मिनिमम 10% ग्रोथ पे खर्चा करो, एडवांस में खर्चा करो, सिस्टम्स में, प्रोसेस में, सॉफ्टवेयर में, पीपल में। 10% ऑफ योर इनकम शुड गो एवरी मंथ टुवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। नहीं हो पाया तो भी कोई बात नहीं है, रिस्क लो ये, बिकॉज ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अपनी SIP 5,000 कम कर दो महीने की, लेकिन अपने बिजनेस के ऊपर में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ। ओके, एंड फाइनली गोल्फ। गोल्फ का मतलब होता है व्हाट यू रिलेट विद गोल्फ। गोल्फ का रिलेशन होता है समय बहुत है, अमीरों का गेम है, जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं और गोल्फ खेलते हैं। I want to give you this thought and end this talk telling you that you can also do this. You can also run your business in such a way that you have a lot of time which you can use playing golf. Golf is just an example. You don't have to do firefighting every day. Set the system, process. I fully believe you can run 1,000 crore AUM business in 2 hours time, and you can play golf for the rest of the time. If you have not figured out how you run your business in 2 hours, then you need to figure that out. It is possible. It is not necessary that you are 30, 40, 50 years and you have to run this business 8 hours, 10 hours, 12 hours every day for 70 years of your age to earn money. What will you do with that money? Your legs will become weak. You can't go overseas. You can't walk. You can't run. You can't play a sport. And you will lose all interest in doing anything in life because you have made money all your life but did nothing else. So do this business in such a way that you have time with you. One way is that, start your day early, 8 o'clock, 7:30, 9 o'clock. Finish your thing by 3 o'clock, 4 o'clock. Keep a couple of hours reserved. Read books. And the evening should be completely free. One challenge I want to give you before I stop this talk is that after 6 o'clock, 4 days a week, you should not do anything related to business. Start with that. I started this 10 years back
when I started taking Wednesdays off, I thought that can I afford not to work on Wednesday? And I started not going to office on Wednesday, and that habit still continues. One day in a week, I don't go to office. I keep it for myself. It is possible. You can make it 2 days. Just before COVID and after COVID, I made it 3 days a week. I did not go to office or did not attend regular work, what you can say. And the rest 3 days was all packed. So I could afford to take 50% time off my business and still I could run my business. Sunday is anyway off. So I give you this thought. सेंसेक्स की चिंता मत करो, 3 साल में अपने आप ही आगे बढ़ जाता है। फियर की चिंता मत करो कि क्लाइंट चला जाएगा, क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला, क्लाइंट आपके साथ ही रहता है। विजन 10 गुना 100 गुना का बनाओ, डबल का विजन बनाओगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। एंड फाइनली समय निकालो अपने लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।